विश्व को पीस और नॉन वायलेंस का पैगाम देने वाला मार्च मुंबई पहुंचा। Let's promote peace and non-violence. पीस और नॉन वायलेंस की ओथ लेते हुए ये है मुंबई के स्टूडेंट्स। विश्व ने महात्मा गांधी को पहचाना और यूएनओ ने गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। यूएनओ ने यह फैसला 15 जून 2007 को किया था। विश्व में बढ़ती हिंसा, मारकाट, जुल्म से लड़ने की बात जब भी की जाती है तो ऐसे समय में पूरी दुनिया को अहिंसा के रास्ते पर चलकर अमन और शांति का रास्ता दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद आ जाती है। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारतीयों को अंग्रेजी चंगुल से निकलने का रास्ता ही दिखाया, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलकर विश्व के कई देश आज अमन और शांति से आगे बढ़ रहे हैं। इसी सत्य और अहिंसा के नारे के साथ ह्यूमनिस्ट मूवमेंट पिछले 15 साल से हर 5 साल में एक बार वर्ल्ड मार्च फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस का एक मार्च निकाल रहा है। इस बार ये मार्च बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर से शुरू होकर आगामी 5 जनवरी 2025 को ख़त्म होगा। ये मार्च सेंट्रल अमेरिकी देश कोस्टारिका से 2 अक्टूबर को शुरू होकर करीब 100 देशों से होकर गुजरेगा। इस मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे समाज को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, इसे समझाने के लिए ह्यूमनिस्ट मूवमेंट की संस्था वर्ल्ड विदाउट वॉर विदाउट वायलेंस ने मुंबई यूनिवर्सिटी के एनएसएस के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर 7 नवंबर को मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके के वालिया कॉलेज में एक सम्मेलन किया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर राफेल डे ला रूबिया मौजूद थे, जिनकी लीडरशिप में पूरे विश्व में ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रेस 9 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि भारत अहिंसा के लिए दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है। हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें इंसान चाहिए या फिर पैसा। हमें इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हर तरह के टकराव से बचकर संवाद का रास्ता अपनाना होगा। Y para eso India es un ejemplo que nosotros estamos recorriendo distintas universidades y ya lo están implementando. And India is a very good example about this mindset, non-violence mindset. In different universities, they are starting to make it happen. Está en el origen de la marcha. I'm very happy to be here, and this is very touching for me. It brings me a lot of emotions that are promoting this World March. His grandson. Me preguntan qué hace su abuelo. They ask him, "What are you doing?" So the understanding of his grandsons is this: my grandfather goes around the world and asks the people not to fight. So for me, that's a real good summarize of what I expect for the new generations to just not to fight. This is the 3rd World March all around the world. So we have talked with a lot of people, thousands of persons, and they all share these few things. They all want simple things, which is a good house, a good partner, a good job, a simple life, and to know life and to live it with involvement. Not even one of these persons wanted wars, conflicts, fightings between each other, all the issues that we are facing today. So on our arrival to India, we have been through so many countries, but here a big emotion arises because you people, your proposal is something that we are thinking about. Today is very urgent, this non-violence mindset, which first was created here formally, but then it is spread all around the world. इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर महात्मा गांधी के परपौत्र तुषारगांधी मौजूद थे। इस मार्च में शामिल होने के बाद उन्होंने इस कोशिश की जमकर तारीफ की। देखिए, आज नफरत और झूठ सब जगह पे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई डेमोक्रेसीज में हमें दिख रहा है कि झूठा प्रचार और नफरत का प्रचार, जो विघटन का प्रचार होता है, उससे सत्ता प्राप्ति बहुत आसान होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे माहौल में शांति और अहिंसा और सत्य, इन 3 चीज़ों का संदेशा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें हर तरीके के नुस्खे अपनाने होंगे।
और इसलिए ऐसी चीज़ों का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि शांति, अहिंसा और सत्य की ताकत आज भी, जब ये लग रहा है कि निराशा का वातावरण सब जगह दिखाई दे रहा है, तो आशा है उसमें, अंधेरे में भी एक किरण हमें दिखती है। इसलिए ये हर रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम कैसे नॉन वायलेंट हो सकते हैं, अहिंसक हो सकते हैं, उसके बाद सत्याग्रह करने बाहर भेजा जाता है। रुबिया मैडम ने कहा कि वो ट्रेनिंग देते हैं ना, कोई टमाटर मारे या पत्थर मारे तो आप रिएक्ट ना करो उसकी। I'll give you, before I finish, and I know I'm running out of time, before I finish I'll just give you one example. In the US, the African American population was oppressed, and Dr. Martin Luther King led the community in their fight for equal rights. But he was inspired by Bapu, and so the top leadership of the civil rights movement in USA came to India and stayed on Bapu's ashram to learn the technique of passive resistance, satyagraha. And they took training over here, and they went back to the US, and for almost 1 year they used to have training for their people to prepare them to go out and protest. And the training used to be that one group amongst them would act like the white people, and one group would act like the Africans. And the group that was designated as white on that day would subject to the other group to abuse, insults, and even physical violence. But the test for the other group was that they would not respond to any of those provocations, and they would not even raise their hands in defense to ward off the blows. हमारे सत्याग्रह के इतिहास में भी अगर आप देखें तो जो सत्याग्रही थे उनको ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि गोरा अफसर कितनी भी हिंसा करे, हम अपने बचाव के लिए भी हिंसा नहीं करेंगे। That is not cowardice. Not defending yourself is not cowardice. Don't let anybody tell you that that is cowardly. Because the most used example to ridicule non-violence is saying that if somebody slaps you on one cheek, they'll turn the other cheek. Yes, that is important, but that is not the only reason for turning the other cheek. The reason to turn the other cheek is that you believe that no matter how evil the other person is, there is some goodness in that person. वालिया कॉलेज से निकलकर एकता, भाईचारे, सत्य और अहिंसा का संदेश देता हुआ ये मार्च भवंस कॉलेज के कैंपस में जाकर समाप्त हुआ, जहां स्टूडेंट्स द्वारा इस मूवमेंट का पीस का ह्यूमन चेन बनाकर समाज और विश्व में सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की शपथ दिलाई गई। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट से मुंबई में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जो इसके ज़रिए से समय समय पर समाज को सत्य और अहिंसा का संदेश देते रहते हैं। And with this, we would want to start today's activities of World Without Wars and Violence, hosted by Valia College. For all Vaishnavajans here of Gandhiji, I want to believe that we have done it in 3 parts. First, we will be listening to our leaders on non-violence and World Without Wars. Some of our students also will express their views on that. Second, we said we will do action. So after this 1 hour we spend here,
we will be taking our peace messages that we have drawn in our colleges and without words we'll pass it on to the community people who will see us walking through the 1.5 kilometers of walk that we will do to reach Bhavan's College. And the third part is our commitment, where we will all gather in a peace symbol and we will all take oath. Our commitment to say how we are going to work for making this world, as United Nations says, a better place to live for all. And then तो ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के एनएसएस स्टूडेंट्स के लिए था। वो उसमें 22 कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए थे। एक प्रोग्राम जो एनएसएस में लिया है वर्किंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, उसके संदर्भ में ये प्रोग्राम था। 3rd वर्ल्ड मार्च फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस हैज़ कम टू इंडिया। तो एनएसएस स्टूडेंट्स को कैसे उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, तो हमने आज का प्रोग्राम 3 पार्ट में किया था। एक में हमने हॉल में सबको बुलाकर नॉन और पीस वायलेंस पर सबके व्यूज़ लिए। उसमें हमने स्टूडेंट्स के भी व्यूज़ लिए, उन्होंने भी अपने विचार रखे कि नॉन वायलेंस के विचार उनके क्या हैं। उसके बाद हमने वो विचार सबको दिखाने के लिए स्टूडेंट्स ने पहले से ही पोस्टर्स बनाए थे पीस एंड नॉन वायलेंस पर, बहुत अच्छा काम किया था। वो सारे लेकर हमने एक पीस मार्च की। तो बिना शब्द के हम पीस मार्च, जैसे गांधी करते थे पीस मार्च, हमने वो पीस मार्च की। और उसके बाद हम भवंस कॉलेज में आकर हमने एक पीस सिंबल बनाया, जो वर्ल्ड पीस सिंबल की जो साइन होती है, ह्यूमन सिंबल बनाया। और उसमें हमने ओथ ली। तो ह्यूमन सिंबल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसमें हमने हर एक स्टूडेंट ने ओथ ली कि वो पीस और अमन और प्यार और नॉन वायलेंस के लिए किस तरह से वो काम करेंगे। हमारा मानना है कि पूरे विश्व के अंदर में हर साल $2 ट्रिलियन का जो व्यापार होता है शस्त्रों के लिए और न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने के लिए, वो बहुत ख़तरनाक है। अगर इसमें से 10% खर्चा कम किया जाए तो पूरे विश्व को फ्री में हम लोग खाना दे सकते हैं। अगर और 10% हम कम करते हैं तो पूरे विश्व को शिक्षण और स्वास्थ्य फ्री में पूरा किया जा सकता है। अगर हम लोग 30% ये खर्च को कम करेंगे तो सभी विश्व के सभी मानव को अपना घर मिल सकता है। परंतु ये स्वार्थ और व्यापारिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व का जो स्थिति बना है उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए हम आह्वान करते हैं सभी सामान्य लोगों को कि इसमें हमारा सहयोग करें और सहकार करें। और आज हम अंधेरी के भवंस कॉलेज में ये पीस मार्च हमने और पीस सिंबल बनाया, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और ये वर्ल्ड मार्च जो है वो न्यूक्लियर आर्मामेंट कम करने के लिए है और पूरे विश्व में शांति हो और पूरे विश्व में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो, उसके लिए ये वर्ल्ड मार्च आयोजित किया गया है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स है 2 ही। किसी भी तरह से किसी का पेन और सफ़रिंग रिड्यूस करना, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। पेन होता है फिज़िकल और सफ़रिंग होता है मेंटल। सो उसी तरह से हम लोग ये वर्ल्ड पीस मार्च और अदर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के 4 या 5 फैक्शंस है। एक है वर्ल्ड विदाउट वॉर्स एंड वायलेंस, जिसके तहत ये पीस मार्च हुआ था। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के जो भी विचार है वो सब मानव प्रगति के दिशा में है। व्यक्तिगत विकास, सामाजिक परिवर्तन, उसके ऊपर जो संस्थाएं बनाई हैं, जैसे कि वर्ल्ड विदाउट वॉर एंड विदाउट वायलेंस, जिसके बारे में आपने कवरेज किया है, तो ये सब अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई हैं। और व्यक्तिगत परिवर्तन के भी बहुत ही सुपर उम्दा प्रोग्राम्स हैं। एक आदमी अपनी लाइफ टाइम में ह्यूमनिस्ट मूवमेंट में पार्ट लेके अपनी लाइफ का फुलफिलमेंट फील कर सकता है कि मेरी लाइफ में मैंने क्या किया। The inequality in our society is basically gender inequality, we are saying caste discrimination, the vote politics, that is, and the corruption. That should be end, and for which youth should come forward and protest against all these forms of evils which is prevailing in the society. इस मार्च में मुंबई के चर्च गेट से विरार तक 22 कॉलेजेस के करीब 600 स्टूडेंट्स शामिल हुए। Today we have gathered here
as a global community to march towards a world where every individual can live without the fear of violence, regardless of their gender. But sadly, the alarming reality is that 1 in 3 women worldwide experiences physical or sexual violence in their lifetime. But this isn't the time for us to suffer in silence. Rather, this is the time for us to take concrete actions. Gender violence is not just a women's issue. Rather, it's a human rights issue. Suffering from gender violence can have a lifetime impact on a person's mental health, education, and the economic opportunities. The introduction of nuclear weapons have made a drastic change in nature of warfare. A nuclear bomb matched with unmatched destructive power has the capacity to destroy the entire city, ecosystem, and loss of countless lives. Throughout history, war has been an unfortunate and recurring chapter in the story of human civilization. From the ancient conflict fought with swords and arrows to the global war of the 20th century, the horror of battle had left indelible marks on societies, cultures, and individuals. A question arises: why do nuclear bombs have such terrifying power? Unlike normal weapons, the effect of nuclear explosion are far-reaching and long-lasting. When we rise in morning and listen to the radio or read the newspaper, we are confronted with the same sad news: violence, crime, wars, and disasters. I cannot recall a single day without a report of something terrible happening somewhere. From Gaza to Sudan to Ukraine and beyond, we see civilians in the firing line, homes blown apart, traumatized, terrified populations who have lost everything and sometimes everyone. Even in these modern times, it is clear that one's precious life is not safe. It is ironic that more serious problems arise from the more industrial advanced societies. Science and technology have worked wonders in many fields, but the basic human problems remain. Thank you so much for coming here. And we are all with you. Just raise your hands and say that we are all with you. As we come to the end of this program, it's my pleasure to invite Dr. Vagia, Principal of Valia College, to propose a formal vote of thanks. Thank you, ma'am. Honored dignitaries on the dais and off the dais, respected principals and NSS POs, our CES Society's GC members, invited guests, and dear students from Valia and so many other colleges, which I see quite a huge number. I, Dr. Vagia, in charge principal of Valia College, consider it to be my honor and privilege to stand before you today to propose a heartfelt vote of thanks following this remarkable event today. As Roosevelt once said, it isn't enough to talk about peace. One must believe in it, and it isn't enough to believe in it, one must work for it. This is exactly what we are witnessing it today. First and foremost, I express my deepest gratitude to Shri Rafel de la Rubia and his dedicated team from World Without Wars and Violence for working towards peace and harmony. Your tireless efforts to unite people, especially our youth, to promote peace and love are truly inspiring. You exemplify strength and determination in standing up for such a noble cause, setting an incredible example for all of us, and definitely showing us the roadmap
to humanity and कर रहे थे। peace. जैसे रिसेंटली एक हफ्ते से हम उसका पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑनगोइंग कैसा जाएगा, जो अभी जैसे मैनेज हो रहा है, तो हिसाब से मीन्स हम लोग को लग रहा है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। अच्छा, हमारे कॉलेज से रैली स्टार्ट होकर यहाँ तक आया, फुल्ली एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। और यहाँ के भी जैसे पीस रैली, नेशनल एंथम, वो सब हुआ। उससे मीन्स लोगों को भी पता चला कि पीस क्या होता है। बहुत अच्छा था। इवेंट ने संदेश क्या दिया, मैसेज क्या दिया? ऑब्वियसली पीस का कि वॉर नहीं रुकनी चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए। सबने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया और बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं मैसेज को लोगों ने समझा है। हर स्टूडेंट ने अच्छे अच्छे पोस्टर्स बना के लाए थे पीस के रिलेटेड। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट अपने स्तर पर पूरे साल भर कॉलेज के बच्चों के अलावा समाज में अहिंसा का संदेश अलग अलग अंदाज में फैलाता रहता है। Non-violence forever. Peace now. Non-violence forever. Third time. आप इतना खुई प्रेस 9 न्यूज़ मुंबई।